Hello friends, I am Hariom Prabhakar. Welcome to the Beautiful Mind classes. We are going to solve graphical solution of linear inequalities in two variables. दो वेरिएबल्स में हम ग्राफिकल सॉल्यूशन का लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. In earlier classes, we learned about how can you draw the graph of linear inequalities. On the basis of that, we will see some important results. First result is, this is result first. If A is a positive real numbers, then first part is, suppose modulus x, okay, A is a positive real numbers, so modulus x less than A. Then what? This implies that because this is the modulus of x, it means it can be positive or it can be negative. So here, if it is positive, then x less than A, and this is minus x less than A. This implies that this one, we have to remove minus from here, then it will be we have to divide or multiply by minus of negative sign, by minus on both sides. So this is minus x less than minus A, and when you divide or multiply on both sides of inequalities, then sign of inequalities changed. If it is less than, so it will be converted into greater than. So now this implies that what? X greater than minus A. Obviously x is positive and A is negative, so x is positive is always greater than from negative. So this is the first result. Similarly, the second result we can see, if modulus x greater than A, this implies here it is modulus x, so it will plus x greater than A, it's obvious, and now this is minus x greater than A, okay. This is the minus x greater than A, but it's negative, it's positive. So how can negative can be greater than positive? It can't possible. So here we will multiply by negative sign. This is the minus x, okay. This is the modulus x greater than A. It means x greater than A or minus x greater than A. Now this is less than minus A. This implies that x less than A. This is the greater than, okay. Now third, if modulus x less than is equal to A, this implies that x less than is equal to A and minus x less than is equal to A, which implies that minus x greater than is equal to minus A,
This implies that x greater than or equal to minus a. Fourth is modulus x greater than or equal to a, which implies that x greater than or equal to a and minus x greater than or equal to a. This implies that minus x get less than or equal to minus a. This implies that x less than or equal to minus a. So we have four results: result first, second, third and fourth. In result, this is the fourth result of part 1. Now we can see some result is similarly. Suppose result 2, it can be like this. Suppose this is, if R is real number and A is fixed number, then what will be? We can see now it will be, suppose modulus of x minus a less than r. So we have to write, this implies that x minus a less than r or minus x minus a less than r. This implies that x minus a less than r implies that x less than, the a will go that side, so it will be converted into positive. So now r plus a. This is O, minus is here. So if you remove from minus from here, so it will x minus a greater than minus r, and now x greater than a will plus, so a plus r. So this is x greater than a plus r, this is x plus, less than a plus r. Sorry, because here a minus r, because r is minus. Okay, so x greater than a minus r and x is less than a plus r. Similarly, we can write all the four result according to this. Okay, now we will see some examples. अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एंड दैट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2 of NCERT book from 11th class, and that question can be solved from the last concept. Concept पढ़ा था graphical solution of linear inequalities in two variables. उसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. So question number 1, this is the exercise 6.2 से है. इसमें है सॉल्व ग्राफिकली. सॉल्व ग्राफिकली. जब भी कोई ग्राफिकली क्वेश्चन पूछा जाए एंड क्वेश्चन इज x plus y less than, फर्स्ट क्वेश्चन इज x plus y less than 5. सो x plus y less than 5. अब ये क्वेश्चन है हमारा. आई थिंक इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है
एज एग्जाम्पल्स। सो हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। so ये है सेकेंड क्वेश्चन। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? नाउ write down solution. 2x plus y is equal to 6. So now we can write here y is equal to 6 minus 2x. जैसे हम solution को solve करते हैं वैसे ही हम इसको भी check करेंगे। Now we have to make the box to draw the graph. This is the first column, this is x, this is y. Now if you put the value of x is 0, then what is y? Y is 4. If you put value of x is equal to 1, then you can put 2 according to convenient. So 2 to the 4, 6 minus 4 is 2. If you put the value of x 2, we will get y is equal to 2. Now we can draw the graph. How will you draw? You can see here. This is the graph. जब हम ग्राफ पेपर पे इसे सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली सॉल्व कर पाएंगे, बट हियर वी कैन सी इन अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्स के फॉर्म में देखेंगे कि थोड़े से अंदाज़ा कर लेंगे हम कि कहाँ पे ये शो कर रहा है ग्राफ, कहाँ से गुजरेगा। तो नाउ दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 तक ही है हमारे पास। एंड रिमेंबर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे ही है, नंबर लाइन पे ही है, माइनस की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं यहाँ। फिर भी वी कैन राइट हेयर -1, -2 एंड -3। अब हम देखेंगे कि x 0 है एंड y इज़ 4। x is 0, y is, this is x, this is y, this one is x dash, this is y dash. Okay, so x is 0 and y is 4. This is 0 and 4, this point. Now x is 2, y is 2, x is 2, y is 2. It means you can go this one. This point is 2 and 2. Okay, so if we join these points, line will go from here to here and cross in this way. Okay, when you draw on the graph paper, you will get the exact figure. Now this line is 2x plus y is equal to 6. This line is what? 2x plus y is equal to 6. ये लाइन है हमारा। बट हमें क्या शो करना है? 2x plus y greater than is equal to 6. So how can you show this question? ये जो inequalities है वो कहाँ शो करेंगे हम? We know 2x plus y is equal to 6, this line is. तो हम देखेंगे कि x और y की जो वैल्यू हम लेंगे, because these values of x and y in this inequality is, this point lies on this line. तो हमें ये शो करना होगा कि ये किधर होगा। तो इसे हम शेडो के तहत दिखाएंगे कि दिस वी कैन एबल टू नो, जिधर शेडो होगा उधर हम समझेंगे कि ये inequalities उस साइड की होगा। तो नाउ वी कैन सी, वी कैन टेक एनी पॉइंट above and below. Okay, so suppose we can take point here, this is the here, and x is 2 and y is 3. If we put x is 2 and y is 3, so 2 to the 4 plus 3 is 7. 7 greater than is equal to 6. Okay, 7 is greater than is equal to 6. So this line satisfy. अगर हम इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। हम कोई दूसरा पॉइंट लेके देखते हैं, चेक करते हैं। जैसे दिस इज द हेयर
here x is 3, y is 4, x is 3, y is 4, 3 2 is 6 plus 4 10 greater than 6. So this line point is satisfied. So we can take here any point below this line. This is x is 1 and y is 1. So 2 plus 1 is 3, 3 greater than 6, not possible. So अगर इस ग्राफ के नीचे हमने कोई भी पॉइंट लिया तो वो इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा. हाउ? वी कैन टेक अनदर एग्जांपल्स इन नेगेटिव आल्सो. सपोज दैट this is the x is equal to minus 2, y is equal to 1. x is equal to minus 2. 2 2 is 4, minus 4 plus 1 यानी minus 3 does not greater than 6. So if you take any values, any points below this line, that points cannot be satisfied this inequalities. If we put any values or any points above this line, that would be satisfy this inequalities. So graph shadow can be this side. This is the shadow. shadow को हम ऐसे शो कर देते हैं. इधर आपने जो भी पॉइंट्स लिया that can be satisfy of this inequalities. So अब हमें इस ग्राफ को देख करके ये कह सकते हैं कि this inequalities will lie in these sides. So this is the graphical representation solution of linear inequalities. अगर हमें ये सब नहीं करना हो और ग्राफ दे रखा हो और ये इनइक्वालिटीज है कि ये इसमें गिवन है, then we can simply write here 2x plus y greater than equal to 6. ये जो है इस पॉइंट में लाई करेगा. तो दिस वॉज द second question of exercise 6.2. Similarly, we can solve more questions. Question number, we can see 10. 10 number is very 10. It is x greater than minus 3. So how can you show on the graph these questions? Solution is, इसको हमें सिंपल दिखाना है. दिस इज द ग्राफ. ओके, दिस इज 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3. जैसे हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं वैसे ही हम इसे भी शो करेंगे. नाउ दिस इज द x ग्रेटर देन इक्वल टू -3. वी कैन राइट हियर. तो x इज इक्वल टू -3 हमने लिख दिया. -3 कहाँ है? x की वैल्यू यहाँ है. दिस इज 3. सो लाइन कहाँ से ड्रॉ करेगा? x इक्वल टू -3 शो करना है तो ये लाइन x पे क्रॉस करेगा. यानी दिस लाइन इज नथिंग, दिस इज x इक्वल टू -3. हमने x इक्वल टू -3 को शो करा. नाउ हमें शो करना है कि x ग्रेटर देन -3. ओके, हमें ये नहीं शो करना है दिस लाइन है x इक्वल टू -3, हमें शो करना है x ग्रेटर देन -3. तो इधर इस साइड जो भी पॉइंट होंगे इसके, दैट वुड बी ग्रेटर देन -3. सो शेडो विल बी दैट साइड्स. ओके, शेडो विल बी दिस साइड्स, इन द राइट साइड्स. ओके, because if you took any point from, you can take point here. Here is what? X equal to -2. Here is what? X equal to 2. Here is what? X equal to 2. Sorry, yes, X equal to 2. तो जो भी वैल्यू हम इधर लेंगे, here क्या है? X equal to -2. तो जो भी वैल्यू हम लेंगे दैट इज ग्रेटर देन -3. तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसके बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे. सो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज आप तक पहुंच सके. और जब भी वीडियो हम डालेंगे आप तक इजीली पहुंच जाएगी. इसलिए बेल बटन को जरूर दबाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू सो मच.